MCS-207 का यूनिट 2 करते हैं। यूनिट 2 यहाँ पे है रिलेशनल डेटाबेस रिलेटेड जितना भी है सभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखते हैं relational database introduction. Relational model is the most common database model used in industry and proposed by EF code based on the theory of relations. Data is stored in the tables. Relational का मतलब data is stored in the table, rows, records and column attributes. Okay, this unit cover terminology, operators and operations in the relational database. So example student table में क्या क्या रहेगा, ID, name, age, department. course table अगर है तो like एक डेटाबेस के अंदर अलग अलग टेबल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स टेबल, कोर्स टेबल. सो यहाँ पे कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी, नेम एंड क्रेडिट्स रहेगा. रिलेशनशिप्स लाइक विच स्टूडेंट इनरोल इन विच कोर्स आर मैनेज यूजिंग कीज. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द रिलेशनल मॉडल्स, simplified explanation. So a database model defines structure of data, how data is organized, integrity constraints, rules to keep data correct, operations, actions we have to perform on the data. In the relational model, data is organized as two-dimensional data. Each table is called a relation. So here's the example table: person ID, name, age and address. एडवांटेजेस जो है रिलेशनल मॉडल का, इजी टू यूज़, ईज ऑफ यूज़, टेबल्स आर सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड, विजुअल बहुत क्लियर होता है. एग्जाम्पल यू कैन क्विकली फाइंड द एज ऑफ विभू फ्रॉम द टेबल. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग डेटा इज ईजी. Data from multiple tables can be combined easily, and you can add a telephone number column to the table. Accuracy का बात अगर करें तो use relations algebra to manipulate data, reduce mistake compared to the other database model. Operation will be discussed in details later. Okay, so think of a school database. ठीक है, स्कूल डेटाबेस में अगर बात करें तो टेबल ऑफ स्टूडेंट स्टोर्स देयर आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस. Another table will score marks. You can easily combine tables to see each student's marks and personal. Exam friendly points अगर बोले तो relational model organize the data as table. Tables are easy to read, flexible and accurate. Data operations use relational algebra to ensure precision. Adding new fields and combine table is simple. So database management system, tuples, attribute, domain relations कुछ है. Simplified. Before diving into the relational model, it's important to know some basic terms like tuple. A tuple is a row in a table representing a single record or object. Example in person table, such person details. ठीक है, अगर रो का बात करें तो नेम, आईडी, एज, एड्रेस इज अ टपल. टपल इज अ रो इन द टेबल. Tuple row in the table means if there is a person table, so each person's details is written in will be written in मतलब क्या है पर्सन, हाँ, तो वो जो भी रहेगा डिटेल्स वगैरह तो वो फील्ड एक रो में रहेगा. In a table has a 3 row. If a table has 3 row, it has 3 tuple. अगर 3 रो है, ठीक है, तो वहाँ 3 tuple होगा. Attribute, an attribute is a column in a table. Column जो होते हैं वो columns name usually indicates with the data they store. Example person ID, name, address. ये n tuple, if a tuple has n attributes called n tuple. Like a person table with 5 column has 5 tuple. Person column with 5 column double. Domain, a domain is the set of allowed values for attribute. Example person id can only be integer from 0 से 10. ठीक है, a domain is a set of allowed values in the attribute. Age can only be greater from 0 to 150. Domains can be defined by type, range and format. A relation is a table itself. It has two key aspects, schemas and insert state.
Structure of the table तो गया relational schemas like define tables name attribute and domain for each attribute. Relation instance the actual rows tuple in a given time. Each row is called a table. यहाँ पे 3 है. Each column is an attribute. Each column is an attribute. These are the and allows values or domain itself, table itself, a relation. Okay, think of a classroom database. Tuple details of one student, like tuples details of student's ID, name, attributes student ID, name, marks, or domain makes only 0 to 100 relationship whole table instance actual data of the present. टपल का अगर बात करें रो एंड रिकॉर्ड एट्रीब्यूट कॉलम एंड फील्ड्स रो एंड रिकॉर्ड एट्रीब्यूट कॉलम एंड फील्ड्स डोमेन अलाउड वैल्यूज रो विद एन एट्रीब्यूट ऑर्डरिंग ऑफ टपल टपल का बात कर रहे हैं तो रो एंड रिकॉर्ड्स आईडी नेम एज ordering of tuples simplified explanation